So children, people were clear on the concept of single column cash book, I suppose. And in one line, if I happen to say, it is as good as a cash account. So people have a query that if a businessman is preparing single column cash book, will he be needing to prepare cash account also? The answer is a very big no. Cash account की जरूरत नहीं है. तो सर फिर कैश अकाउंट में पूरा काम बन जाना रहा था, क्यों हम कैश बुक बना रहे हैं? बिकॉज मेनी अ टाइम्स बिजनेसमैन को थोड़ा सा सस्पेशन लगता है कि उसका अकाउंटेंट जो लेजर मेंटेन कर रहा है कहीं फ्रॉड ना कर दे, तो उसने लेजर वाला अकाउंटेंट अलग रखा हुआ है और डेली बेसिस पे व्हाटसोएवर ट्रांजैक्शंस आर परफॉर्म फॉर कैश उसको रिकॉर्ड करने वाला अकाउंटेंट अलग है. दैट्स व्हाई सो कॉल्ड वी प्रिपेयर सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट. अब हम कैश अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बट लेजर में अदर अकाउंट्स वुड बी प्रिपेयर्ड और यहाँ पे कैश बुक बन जाएगी. सो जब आपने सिंगल कॉलम कैश बुक बना ली, there is no further need to prepare cash account in ledger. Heard well? अब थोड़ा सा अकाउंटिंग सिस्टम को और इकोनॉमाइज करते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव करते हैं, और अब हम एक ऐसी कैश बुक बनाएंगे जहां पे कैश के ट्रांजैक्शंस के साथ साथ डिस्काउंट के भी ट्रांजैक्शंस आ जाए. तो आपके सामने एक ट्रांजैक्शन मेंशन्ड है, कैश अकाउंट डेबिट, जिसकी जर्नल एंट्री बनेगी discount allowed account debit to Suresh, if I am not wrong. Urge everybody to please put it. Cash account debit, discount allowed account debit to Suresh. And children, the next transaction whose journal entry would be Meena debit or Meena's account debit to cash to discount received. In front of cash in the first entry, we'll put 1980, discount 20, and in front of Suresh 2000. Meena would be debited with 2500, cash 2470, and 30 rupees in discount. Do this much quickly, then we start with the posting procedure और फिर इकोनॉमाइज करना स्टार्ट करेंगे. So children, अगर आप कैश का अकाउंट बनाएंगे तो पोस्टिंग क्या करेंगे? टू सुरेश, एंड इन डिस्काउंट अलाउड ऑल्सो क्या लिखेंगे? टू सुरेश. और सुरेश में क्या लिखेंगे? बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट. आई एम नॉट वरीड विद दैट, वो तो सबको आता है. सिमिलरली चिल्ड्रन, जब आप इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय मीना, एंड डिस्काउंट रिसीव में भी क्या लिखेंगे? बाय मीना. बट अगर मैं आपको इकोनॉमिकल अप्रोच एक बता दूं, इंस्टेड ऑफ 3 we'll be preparing just 1. That sounds better or not? In cash account we wrote to Suresh, as well as in discount allowed account also we wrote to Suresh. To Suresh एक ही बार लिखने को बोलूं और अमाउंट अलग अलग लिखवा दूं, कुछ टाइम बचेगा, कुछ पैसे बचेंगे आपके. We have written by Meena on the credit side of cash account also and by Meena on the credit side of discount received account also. अगर मैं बोलूं कि by Meena should be written only once, वैल्यू 2 बार लिख दीजिए, तो थोड़ा सा समय और पैसा बच जाएगा कि नहीं? That leads to the preparation of what is called as double column cash book. सबको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे? चलो, नजर आ रहा होगा. We wrote to Suresh only once. In cash the value of cash, in discount the value of discount allowed. So आपने कंपाउंड जर्नल एंट्री तो पढ़ी होगी, ये है कंपाउंड लेजर पोस्टिंग. लॉजिक समझ में आ गया? Similarly we have written by Meena in discount also, and we wrote by Meena in so called cash account also. Children, here what we have applied is simply, यहाँ पे by Meena और यहाँ पे by Meena 2 बार लिखने की बजाय we can put it only at one place only once, और columns 2 लिख दें. So what sounds better, 3 ledger accounts or 1? Logic समझ में आ गया? What is a double column cash book with discount column? चलिए, so here we are concerned with transactions related to cash received and paid, as well as discount allowed and received. Which type of discount is only recorded in the books of accounts, children? Cash discount or trade discount? Only cash discount. So double column cash book is of multiple types, children.
इट्स विद कैश एंड डिस्काउंट जो सिलेबस में है, कैश एंड बैंक जो सिलेबस में है, डिस्काउंट एंड बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट अब ये सीख जाएंगे तो अब वो भी सीख जाएंगे, कुछ खास नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? सो लेट्स परस्यू अ क्वेश्चन ऑन दिस, फिर मैं आपको बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। चिल्ड्रन, इज द क्वेश्चन विजिबल ऑन द स्क्रीन? क्वेश्चन नंबर 4 सबको विजिबल है गोपालन? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट सेज व्हाट चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। हाउ डू वी पुट इट? व्हाट्स द ईयर चिल्ड्रन? 2004. Okay, how do we record this? Two balance. So my balance brought down. My balance brought down or two balance brought down? Sorry sir, two balance brought down. Two balance brought down. It's an asset. तुमने तो इकोनॉमिक्स अप्लाई कर दी सर। पैसा है, जिम्मेदारी है सर, लाइबिलिटी है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से रिसोर्सेज लाइबिलिटी होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से अकाउंटेंसी की डेफिनेशन विभिन्न है। हाउ मच चिल्ड्रन? 4000. कैश परचेजेस, व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? Purchase account debit to cash. What posting will be certainly doing? By purchase account. Is it a very great rocket science? Value children? 2000. So इतना करने से समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट कॉलम भी हर बार फिल किया जाए, ये जरा भी मैंडेटरी नहीं है। चले आगे बच्चों? Shall I proceed further? Wages paid. What would be the journal entry children? Wages account debit to cash. What posting we'll be doing? By wages account. Then children, cash sales journal entry. Cash account debit to sales. What posting we would be certainly doing? To sales account. How much? 6,000. What is the journal entry for cash received from Suresh and discount allowed? Cash account debit, discount allowed account debit to Suresh. So what posting we'll be doing? To Suresh's account. In the column of cash, we'll be putting 1980. In the column of discount, 20. So is it necessary children that every time you fill up the cash column and those many number of times you need to fill up discount allowed also? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? Next, what is the journal entry for cash paid to Meena? Meena's account debit to cash to discount received. In Meena's account, had it been prepared, we could have written to cash to discount received. But यहाँ पे मीना का अकाउंट तो बन नहीं रहा है। कैश बुक में क्या लिखेंगे? By Meena's account. 2470 in cash and 30 in discount. Cash paid to Radha. Journal entry children. Radha's account debit to cash. What posting we'll be doing? By Radha's account. How much? 400. Purchase goods for cash. Journal entry children. What posting we'll be certainly doing? Make it by purchase account quickly. Chaliye. The last day would be 31st January 04. Balance carried down. 6 plus 4, 10. 11,980 is the debit total children? Yes, sir. Definitely credit पे कमी होगा. It's coming 5540. 2040 plus 2470 plus 400. 6980 total आ रहा है. 11,980. 5,000 आएगा. If I'm not wrong. 2,000 children plus 40 plus 2470 plus 400 plus 2070. Yes. 6980 total है. 11,980 में से माइनस कर दीजिए. 5,000. Children, discount on the debit side
is which type of discount? Allowed or received? Allowed. And on the credit side? Received. तो जब डिस्काउंट हमारा सेम नहीं है, इट corresponds to two separate identities. Debit side expense, that is loss, credit side income, that is gain. तो अब यहाँ पे आप इसको बैलेंस नहीं कर सकते. You will simply be putting the total of debit in the debit total, children, and credit में credit का total. Question arises, सर जब डिस्काउंट बैलेंस नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस में कैसे जाएगा? I never said कि डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करेंगे. I said कि यहाँ पे नहीं करेंगे. कहां पे करेंगे? I'll let you know. Do this much quickly. Let's move further, children. Let's move further. थोड़ा सा जादू हो गया है. So children, discount allowed and discount received के आपको ledgers नजर आ रहे होंगे. Before we proceed with them, आप सबसे पहले to balance brought down लिख दीजिए. In cash column it was coming 5,000. Nothing in discount, children. Discount का total आपने यहाँ पे कितना लिखा था? 20 रुपीज ऑन द डेबिट और 30? 20. एंड यहाँ पे कितना लिखा था? 30. तो ये जो 30 रुपीज है डिस्काउंट रिसीव्ड, चिल्ड्रन, ये डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर में जाएगा. बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एज पर कैश बुक, देयर वील बी पुटिंग इट्स कैरेट डाउन एंड ब्रॉट डाउन. और यहां से इसकी जर्नी ट्रायल बैलेंस की स्टार्ट हो जाएगी. सिमिलरली डिस्काउंट अलाउड ऑन द डेबिट साइड विल बी पोस्टेड on the debit side of discount allowed account, then we'll put carried down on the credit and brought down on the debit. और इसकी जर्नी भी ट्रायल बैलेंस ही यहीं से स्टार्ट हो जाएगी. Though when the question of cash book double column is asked in the examination, generally आपको डिस्काउंट अलाउड वगैरह बनाने को बोला नहीं जाता, बट कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल आपको पता होनी चाहिए that if we do not balance it, तो ये कैसे बैलेंस होता है, बेसिकली कैसे इसका टोटल टैली होगा, कैसे ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा. समझ में आ गई बात सबको? कंफर्म? चलिए, एनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? चिल्ड्रन, एनी डाउट्स? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट चिल्ड्रन, वी हैव अगेन अनदर डबल कॉलम कैश बुक, बट दिस टाइम इट इज नॉट कैश विद डिस्काउंट चिल्ड्रन, इट इज कैश विद बैंक. मैं आपसे कुछ ट्रांजैक्शंस पूछूंगा और आप मेरे को उसकी जर्नल एंट्री बताएंगे, बट बिफोर दैट लॉजिक वही है. ऑन द डेबिट साइड वील रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट्स एंड ऑन द क्रेडिट साइड वील रिकॉर्ड कैश पेमेंट्स. तो ये हो गया, तो कैश अकाउंट की जरूरत नहीं. व्हाई नॉट बैंक का ट्रांजैक्शन भी यही रिकॉर्ड कर लें? सर एडवांटेज, बिजनेसमैन हमेशा टोटल कैश या टोटल बैंक में जरूरी नहीं ऑपरेट करे. ही में हैव अ कंबाइंड एटीट्यूड. सप्लायर को पेमेंट करना है, कुछ कैश दे दो, कुछ चेक काट के दे दो, बिकॉज ऑल कैश कैन नॉट बी केप्ट इन द ऑफिस, चोरी हो सकता है. सो बिजनेसमैन को एक कंपैरेटिव सो कॉल्ड डेटा चाहिए, हाउ मच कैश वी हैव विद अस, कहां से कितना कैश आया और बैंक में कहां से कितने पैसे आए, तो टोटल कैश पोजीशन उसको पता लग जाएगी. दैट्स व्हाई दे प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक. लॉजिक समझ में आ गया? सो वी रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट्स ऑन द डेबिट एंड पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट. Similarly, deposits in bank on the debit and withdrawals on the credit. ये बात समझ में आ गई? बट एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको गौर फरमानी है. What is that? I'll let you know. What is the journal entry, children, for the transaction started business with cash? So we'll be putting it here and after as to capital, let us say 40,000 rupees. सुनाई पड़ गया? Another transaction received rupees 10,000 through check which was sent to bank, which was from Mr. Manohar. What will be the journal entry? Received a check for rupees 10,000 from Mr. Manohar which was sent to bank. Answer, what will be the journal entry? Bank account debit to Manohar. Very good. So what posting we'll be doing? To Manohar or Manohar's account. People can put it. Here, children, the journal entry constituted bank account on the debit side, isn't it? That's why we happen to do the posting in a bank column. So again, children, it is never necessary कि हमेशा कैश और बैंक दोनों में पोस्टिंग होगी. 90% transactions will be like this.
Either they have been posted in cash account, not bank account, that is cash column, not bank column. हार्डली 5-7-10% ही आपको मिलेंगे जो शायद दोनों में चले जाएं, या ये भी मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया आपको. Heard well? Journal entry for goods bought for cash, children. Journal entry for goods bought for cash. Purchase account debit to cash. Had it been a purchase account, what posting we could have done? To cash. But वो तो हम बना ही नहीं रहे हैं. Cash में what we'll put, children? By purchases account. Let us say it is 5,000. If the transaction is, children, rent paid by check, what will be the journal entry? Rent account debit to bank. Rent का लेजर होता तो to bank लिखते. बैंक में क्या लिखेंगे बच्चों? By rent. What I said, बैंक में क्या लिखेंगे? मतलब bank column. So when your journal entry constitutes cash account, you will be putting the value in the cash column. When your journal entry constitutes bank account, you will be putting the value in bank column. So accounts have been converted into columns. Moving further, children, moving further. Sold goods worth rupees 30,000, received half in cash and half through check. Check is sent to the bank immediately. क्या entry होगी? Cash account debit, bank account debit to sales. So children, we'll be putting here two sales, 15,000 in cash and 15 in bank. Is that heard well? Salary paid through check, journal entry, children. Salary account debit to bank. So in bank, what we'll be putting? By salary account. Let us say 5,000 we are paying. Heard well, children? Heard well. Received a check from X, which was immediately sent to bank. Journal entry, children. Bank account debit to X's account or simply X. Let us say 4,000. Is this heard well by all children? Completed. Moving ahead. Children, what is the journal entry for cash deposited into bank? Cash deposited into bank. Bank account debit to cash. Very good, very good, very good. And what is the journal entry for cash withdrawn from bank, not for personal use? Cash account debit to bank. Excellent answer. Is this heard well? Please put it. If I say आपको बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, what you will be putting? इस जर्नल एंट्री को बैंक अकाउंट में लिखना है. क्या लिखेंगे आप? To cash. I repeat. If I say कि आपको बैंक अकाउंट में ये एंट्री पोस्ट करनी है, क्या लिखेंगे आप? To cash. किस अकाउंट में? So value will be written in bank column, children. What's the value? Say 3,000 rupees. Now if I ask how this entry would be posted in cash account, what would be your answer? By bank. I repeat, children. क्या लिखेंगे? By bank. So I asked the question like this: how this entry would be posted in cash account? People said by bank. Where by bank, children? Cash account. Value will be in the cash column. It's it's 3,000. This is the first out of the two entries that are getting their dual aspect completed in this book of entry only. These entries are called as, children, contra entries, and while putting them we mention a small c, where the word contra means against. I repeat, the word contra means against. Similarly, if I ask you all how this entry could be posted in cash account, what's your answer? To bank account. I asked the question how this entry would be posted in a cash account. You gave me the answer to bank.
कैश में लिखेंगे चिल्ड्रन. Let us say the value is only 1000. And how this could be posted in bank account children? By cash. So journal entry के posting के rules तो same है, but बहुत बच्चे बेचारे इसमें गलती करते हैं. तो उस गलती को avoid करने के लिए I'll be giving you a Brahmastra. And what is that Brahmastra? It won't be a flop Brahmastra. If the text is cash, column would be children bank. I repeat, if the text is cash, column would be bank. And if the text is bank children, column would be cash. I repeat, if the text is bank children, column would be cash. So particulars column में जो आप text लिख रहे हैं और amount column में जहां पे आप value put कर रहे हो, they ought to be opposite. ये same नहीं होना चाहिए. समझ में आ गया? बट ये नहीं कि आप कुछ भी गलत लिख दें. आप यहाँ बाय बैंक लिख के कैश कॉलम लिख दें, आपको नंबर मिल जाएगा. सही रिकॉर्ड करना है आपको, सही रिकॉर्ड करना है. डिपॉजिट वाली एंट्री विड्रॉल की तरह कर दी, विड्रॉल वाली डिपॉजिट की तरह, तो अंडा मिल जाएगा आपको. ओके, तो ये क्रॉस चेक है. व्हाटसोएवर यू आर पुटिंग इन द पर्टिकुलर कॉलम, वैल्यू का कॉलम उसका ऑपोजिट होगा. तो इफ यू हैव रिटन बैंक हियर, वैल्यू विल बी रिटन इन विच कॉलम? If you have written cash here, value will be written in which column? Bank. If you have written cash here, value will be written in bank. If you have written bank here, value will be written in cash. Heard well, children? Agla transaction. Machinery bought and payment made by check. So children, we'll be putting by machinery account. Say the value is 8,000 rupees. Heard well children? समझ में आ गया सबको? चलिए, let's Yes, start sir. the balancing children. Debit side in cash 56,000 children, and credit we have 8, so balance would be how much? 48,000. कैश कॉलम कैश के साथ और बैंक कॉलम बैंक के साथ. बैंक में थोड़ा सा कॉशन लेना चिल्ड्रन. कैश में तो ऑलवेज इट वुड बी देयर, डेबिट विल बी ईदर मोर और इक्वल टू क्रेडिट, कभी कम नहीं हो सकता. मैंने आपको क्वेश्चन बताया था. बैंक में चिल्ड्रन हो सकता है डिपॉजिट ज्यादा हो, विड्रॉल कम हो सकता है, विड्रॉल ज्यादा हो, डिपॉजिट कम. व्हाई सर, व्हाई इट इज सो? बैंक करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है. तो आपने अगर बैंक में पैसे कम भी रखे हैं, चेक काट दिया, यू हैव एन ओवरड्रॉन, एक्सेस ड्रॉ करने की फैसिलिटी है, तो बैंक आपका चेक ऑनर कर देगा. तो शॉर्टेज डेबिट में आएगी और आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. तो बैंक में थोड़ा सा कॉशन रखना है आपको. 10 plus 15 is 25 plus 4 29 plus 3 how much children? 32. I've already checked कि 32 इस साइड पे नहीं है. So children, it is 5 plus 1 6 plus 1 7 and 8 15. Balance क्या बचेगा? 17,000. Is it a very great rocket science? Is it a very great rocket science, children? Be quick, be quick. बस कॉन्ट्रा एंट्री पे फोकस रखिएगा. थोड़ी सी मैं एडिटिंग कर रहा हूं चिल्ड्रन, थोड़ी सी. ये जो मशीनरी 8,000 की थी, आई प्री अज्यूम ये 8 की नहीं है, ये 80,000 की है. कितने की है? सो 80 plus 1 is 81 plus 5 how much? 86 plus 1, it's 87,000. Now which side sounds short? Debit. By what? 15 plus 10 25 plus 4 29 32. 87 minus 32 is what children? 55,000. So we'll be putting here what is called as to balance carried down, and then we'll be putting here by balance brought down. Children, this is called as contra balance. Contra means दोनों साइड पे बैलेंस है. So businessmen would be getting a glance affair कि बैंक से हमने 55 का उधार लिया हुआ है,
और कैश हमारे पास कितना है, तुरंत अकाउंटेंट को बोलेंगे कम से कम 40-45 तो जाके बैंक में जमा करो अगले महीने की 1 तारीख को, ताकि कल से थोड़ा सा इंटरेस्ट कम चार्ज हो। तो फॉर कंपेरेटिव व्यू ओनली चिल्ड्रन, वी हैपन टू प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। हर्ड वेल चिल्ड्रन, पक्का? तो बैंक में टू कैश लिखा था और कैश में बाय बैंक। सिमिलरली कैश में टू बैंक लिखा था और बैंक में बाय कैश। Please put these markers children, then we connect again and continue. Be quick. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, this represents children overdraft. You might say कि सर हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, हम कैसे लिखेंगे? No problem. आप रिकॉर्डिंग से फिर से इसको रीड्रॉ कर लीजिएगा, वो जो बना हुआ है एक और बना लीजिएगा इस तरह से, मशीनरी की वैल्यू चेंज करके। ओके